I'm so bad at taking criticism. How do you react? I'm like, why? क्यों? Like, I haven't done anything to you. Why are you saying that? गुस्सा आता है या क्या? गुस्सा नहीं आता, बस होता है कि मैंने आपको क्या बोला जो आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो. लेकिन it is what it is, obviously. Or are you able to distinguish between criticism and constructive criticism? Are you able to do that? Yeah, because first of all, I try not to take things to my heart, which is very hard for me. But I try. लेकिन जब भी कोई नेगेटिव सा कमेंट आता है जो इतना पॉजिटिव नहीं होता, आई ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग दैट आई शुड लर्न फ्रॉम. क्योंकि द पॉजिटिव कमेंट्स, इवन द पॉजिटिव कमेंट्स, द नेगेटिव कमेंट्स, everything that people say to you about your acting is something that you should learn from. If somebody says, okay, the way you acted in this scene was amazing, I was so blown by it, do it more often. Maybe other people will like it. तो positivity हो या negativity हो, दोनों से सीखो. You know, it's the way you take it. And I try to take it as a negative comment. Okay, they said something about my voice. You know, it's something I can't change. So we're going to ignore that. But if they say कि ये जो इसकी hand movement थी, let's say, I haven't ever gotten that comment, let's say, इसकी ये जो hand movement थी, it was kind of weird. I'd look at it and I'd be like, okay, maybe it is weird. Good. Change it. Not in a way that I'm letting the negative comments affect me. एक criticism होता है और एक somebody telling you that, you know, maybe you should not do this. Yeah, you're very smart for a 13-year-old. I have to say that it's good. देखो, self awareness बहुत जरूरी है. तो अगर आप self aware हैं, तभी आप distinguish कर सकते हैं कि ये comment जो है ये constructive है या ये किसी ने ऐਵੇਂ लिख दिया है आपको सिर्फ, you know, to get to you. क्योंकि एक sane इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि अपनी weaknesses का पहले पता होता है, strength से भी. और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको पता है कि अगर मैंने एक सर्टेन तरह से एक्ट किया है, अच्छा किया है, नहीं किया, वो अपने अंदर अगर इंसान ये समझ के बैठ जाए कि मैंने तो गलती की नहीं है, मैंने तो बिल्कुल सही किया है, तो फिर वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. हम तुम की हमने बातें कर ली, कोई और आप कहना चाहती हैं कोई बात हम तुमसे रिलेटेड? कुछ हम तुमसे रिलेटेड इज नथिंग रियली, बट आई रियली लाइक माय कैरेक्टर. You know, I'm so thankful for everything. That is what I want to say. I've always wanted to say that. जब नहीं भी मिला था, I was very thankful for everything I've gotten. Mashallah se, I have, you know, I'm very blessed. If you think, you know, because see, I go to a great school. Mashallah se, studies भी handle हो जाती हैं. My family is great. Alhamdulillah, they're very supportive. From my sister to my father, my brother, everyone. My mama, everyone is very supportive. Oh, you have a sister as well? Yeah, I do have a sister as well. I thought you were only Ahmed than you. No, it's Labib. She's the oldest. And then Ahmed and then me. And Labib's not interested in... Oh, बिल्कुल भी नहीं. Not at all? वो बिल्कुल भी नहीं. Labib is the kind of girl जो बस कमरा बंद करके पढ़ेगी. Labib? Exactly. I'm not like her. मुझे पता है कि मैंने कैसे पहने हैं. So is she a good student, Labib? Oh, she's an outstanding student. Well done, Labib. She goes to IBA. Oh, mashallah. Mashallah से she's doing her bachelor's from IBA in computer science. तो वो तो बस पढ़ती रहती है. तो मुझे कभी-कभार लगता है कि मेरी बहन नहीं है. ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ही घर में you've got the पढ़ाकू kid also, you've got the one who's interested in the fine arts. And you've got the sports kid, my brother. So Ahmed, what does he play? What does he play, Ahmed? Ahmed plays football and cricket, both. दोनों. Well done, Ahmed. Mashallah. Nice, interesting family जो different activities में involved हैं. That's the way to go. Moving forward, 2 projects आपने कहे, एक का आप नाम नहीं ले सकती हम टीवी का, एक का नाम आपने ले लिया जो कि पिंजरा है, जो कि वजाहत रऊफ की प्रोडक्शन है. इसको किसने डायरेक्ट किया है? इसने नजफ बिलग्रामी साहब ने इसको डायरेक्ट किया. और इसमें आपके साथ है हदीका कियानी साहबा जो कि आपकी मदर प्ले कर रही हैं जी. और कौन है? उमैर राना है. अच्छा, माशाल्लाह. आशिर वजाहत. आशिर इज आल्सो देयर. एंड अहमद who's playing not my brother, दूसरा इंडस्ट्री. समझ आ गई मुझे कि it's not your brother. Not to clear it up for the audience. ठीक है. So पिंजरा कौन से चैनल पे आएगा? पिंजरा ARY पे आएगा. पिंजरा ARY पे आएगा. What can you tell us about Pinjra and your character in Pinjra? I'm very excited about my character. That is what I can say. The acting and the things I've learned from Pinjra, mashallah, alhamdulillah, because it was the first project. Just मैं ज़्यादा आई हूँ, I guess, कह सकते हैं. Screen time ज़्यादा है? हम तुम के अलावा, हाँ, screen time ज़्यादा है पिंजरा में. और पिंजरा में it's basically बच्चों की भी एक अलग से story है, और जो मेरा character है, if you understand it, it's so deep. Because when I was playing that character, मुझे बहुत सोचना पड़ा था. And thank God I had Najaf ji by my side because he was such a sweetheart. He was, वो हर एक scene
vividly explain करते थे. So that was a very big advantage that we had. लेकिन I had so much fun playing Abir क्योंकि I had मुझे negative, I was Abir. Okay. मुझे negative भी play करने को, थोड़ा सा negative play करने को भी मिला. I also played very friendly. आगे जाके Abir का character. How does a 13-year-old become like negative? Like me. I don't know, but it's very fun to play negative characters. Yeah. What's your thought on this, by the way? मैंने बदनसीब नहीं देखा. लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग नाउ कि 13-14 साल के बच्चों का एक नेगेटिव किरदार टीवी के ऊपर किस तरह का होगा. आई एम वेरी लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कैरेक्टर. में तो आई गिव पॉइजन टू दुआ, अ 13-year-old. या Really? रूबी के जो माइंडसेट था, रूबी वाज वेरी स्पॉइल्ड बाय हर फादर, और रूबी शी गॉट एवरीथिंग शी वांटेड इन लाइफ. और फिर वो जब स्कूल में उसकी बिगेस्ट आई थिंक हर ईगोइस्टिक पर्सनालिटी केम फ्रॉम कि स्कूल में उसके स्ट्रेट एज आते थे. शी वाज अ ग्रेट स्टूडेंट, शी वाज एन अमेजिंग स्टूडेंट, एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट. और जब उसके ग्रेड्स थोड़े से लो होते थे, उसके फादर आते थे, बात करते थे और स्कूल से ग्रेड्स बढ़वा देते थे. व्हेन दुआ केम इन हर स्कूल, रूबी से ज्यादा अच्छे ग्रेड्स आने लगे दुआ के. एंड जब that was Ruby's personality trait, having good grades. And somebody was hurting that egoistic personality. And when you hurt an egoistic person, the way that they react is annoying. So and now very let's say, what's the word, egoistic. They are very egoistic, and Ruby was exactly that. So the Dua आई school में और Dua started being in her place, Ruby was very upset by that. And obviously Ruby always was very spoiled by her father. उसको हर चीज़ मिली जब भी उसको चाहिए थी. तो Ruby, the only way that she could think was give her poison. And she did that. Now that we've established that you're mashallah smart kid, तो मुझे ये बताएं आप कि इस तरह के characters for a 13-year-old या इस तरह के characters TV के ऊपर दिखाना, you think that they have any sort of negative impact on the audience and with young kids watching? Obviously 13 साल का किरदार है तो देख ही रहा होगा कोई ना कोई बच्चा. Exactly. लेकिन मुझे लगता है कि sometimes dramas में जो messages आते हैं, they're awareing you of something that this might happen, so be careful. I think बदनसीब was the same thing, even though they were awareing, they were being like ऐसे भी बच्चे होते हैं मेरी तरफ. लेकिन फिर भी my character especially, it was I don't know, I think it might have a negative impact, but most of the time the dramas वो आपको बता रहे होते हैं कि ऐसी भी situations हो सकती हैं. मुझे तो ये मेरी assessment है कि जो adult negative characters हैं हमारे ड्रामा, तो वो नहीं संभाल पाते. मेरा opinion है. तो यंग नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाना एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. ऑब्वियसली यू नो द डायरेक्टर और राइटर. बदनसीब मैंने देखा नहीं है, बट आई रियली लाइक टू वॉच पिंजरा एंड सी कि वो क्या डायनामिक क्रिएट होती है व्हेन यू शो. बिकॉज़ नो आई वांट टू. हर कैरेक्टर का जो चेंज आता है एंड द रियलाइजिंग एवरीथिंग, it's done in such a beautiful way. है क्या, अगर इफ यू कैन शेयर, ऐसे मरवा ना देना मुझे भी और खुद भी ना ऐसा हो के. दो फैमिलीज होंगी, और बेसिकली जो जितना मुझे पता है कि एक फैमिली है जिसमें दे हैव एवरीथिंग. दे हैव अ डैड, दे हैव अ मॉम, दे हैव मनी, दे आर वेल ऑफ. लेकिन पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस करते हैं. आप उस फैमिली में ही हो? जी, मैं उस फैमिली में. हदीका जी एंड उमैर राना. So they're playing your parents. Yes. Umair Rana and Hadiqa ji. Umair Rana has shown to be a very not a nice father and not a nice husband. तो जो हम बच्चे हैं, especially me and the younger brother, आशिर को उन लोगों ने बहुत प्यार दिया है. He's playing your brother, elder brother. He's playing my older brother. तो उनको उन्होंने बहुत प्यार दिया, लेकिन हमें मुझ पे especially because I'm a girl, उन्होंने मुझ पे बहुत restrictions रखी हुई हैं. And Abir wants freedom. Abir is not, she wants freedom. She wants to be a teenager. A 13-year-old wants freedom. Yeah, well, I was playing a 14-year-old. Not that big of a difference. A 14-year-old wants freedom.